Hello everyone, how are you all? So in the previous class we learned about the negative way of do this plus action first. Now we'll talk about the next way, question positive way of do this plus action first. Okay? So in this class we learn all the question positive, question negative, reason question positive and reason question negative way of do this plus action first. Okay, so if we talk about the question type way, then we use do और does before whom to talk. यानी do does हम अगर हम questions की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी question हो, reason question positive हो, negative हो या question positive question negative हो, इसके अंदर हम do और does we use before whom to talk. यानी जिनसे हम बात करते हैं उनसे पहले हम यूज कर लेते हैं. अब यहाँ पे आप देखते हैं in positive way we add S or yes after action first, but in question we added does before whom to talk. Okay, so यहाँ पर हमने does को whom to talk से पहले ऐड किया है और do को whom to talk यानी you से पहले ऐड किया है. Okay, so this is the formation of sentence in question, and this is the example of question positive. Okay, so question positive means when we talk about any action बट इन पॉजिटिव वे इन अ क्वेश्चन सेंस. यानी हम जब किसी एक्शन की बात एक पॉजिटिव वे में करते हैं लेकिन हमारी जो सेंस होती है वो एक क्वेश्चन की होती है. जैसे यहाँ पे मैंने पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो. ओके, सो इन हिंदी इट इज नॉट कॉल्ड क्या तुम हिंदी बोलते हो, इट इज कॉल्ड क्या तुम हिंदी बोलते हो. नहीं, इट इज कॉल्ड तुम हिंदी बोलते हो. यानी हमारे बोलने के सेंस से हमारा ये आंसर आना चाहिए. दैट वुड बी द आंसर वुड बी ओनली यस और नो. यानी आंसर किसमें होगा, सिर्फ यस या नो. अभी मैंने आपसे पूछा कि तुम इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, तो व्हाट वुड बी द आंसर, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो. या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे. ओके, लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि आप क्या खाना खाते हो, तब आप आंसर देंगे कि मैं ये खाता हूँ. ओके, लेकिन मैंने अगर पूछा आपसे आप खाना खाते हो, तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ योर, आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा यस या नो. तो आप आंसर उसमें कैसे देते हैं, यस या नो में आंसर देते हैं. मींस क्वेश्चंस पॉजिटिव की बात करें या क्वेश्चन नेगेटिव की बात करें, ये दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो आंसर आता है वो यस या नो में ही आता है. ओके, बिकॉज देयर इज नो रीजन, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है. So that's why we answer in yes or no only. Okay, so now we talk about action in question positive. तो अगर हम question positive में action की बात करते हैं तो we will say do you speak English, do I speak English, do they speak English, does she speak English, does he speak English, does Mr. Singh speak English. Okay, so that is the part of question positive. तो ये तो हो गया हमारा question positive. Okay, there are some examples of question positive. Do you live in Spain or does he live in Mexico? Okay, as I told you that we will not add s or es when does come in the sentence, क्योंकि s और es हम add नहीं कर रहे हैं अगर does हमारा sentence में आ जाता है. So this is the example of question positive. Now we'll practice the concept of question positive. Okay, so practice it. Do I speak English? Do we speak English? Do you speak English? Do they speak English? Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Does Mr. Singh speak English? Okay. Other example, do I live in Spain? Do we live in Spain? Do you live in Spain? Do they live in Spain? Does he live in Spain? Does she live in Spain? Does it live in Spain? Does Mr. Singh live in Spain? Okay, so practice like this and then random it. Okay, so now we talk about the other part of how to talk question negative. So as I told you, we'll use contraction of do not and does not. Okay, so this will come at the beginning of the sentence as don't they take food, and doesn't
he take food. Okay, so don't I take food, don't we take food, don't you take food, don't they take food, doesn't he take food, doesn't she take food, doesn't it take food, doesn't Mr. Singh take food. Okay, and in हिंदी ये क्या होगा कि तुम खाना नहीं खाते हो, वे खाना नहीं खाते हैं. ओके, तो आंसर क्या आएगा? यस या नो. सो क्वेश्चन पॉजिटिव या क्वेश्चन नेगेटिव, अगर हम दोनों में से किसी की भी बात करते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया. तो यानी क्वेश्चन पॉजिटिव की भी अगर हम बात करें और क्वेश्चन नेगेटिव की, तो आंसर वुड बी ओनली इन यस या नो फॉर्म. यानी आंसर जो है हमारा हाँ या ना में ही आएगा, उसके अलावा आंसर नहीं हो सकता है. ओके, जैसे मैंने पूछा तुम खाना खाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ मैं खाना खाता हूँ. ये मैं आंसर क्या दूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ. अगर मैं पूछा तुम खाना नहीं खाते हो, बड़े कमजोर लग रहे हो, तो क्या आंसर दोगे, नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ, या हाँ मैं खाना खाता हूँ तो हूँ. फिर हम उसके बाद उसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे, है ना. सो द थिंग इज, हम क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन नेगेटिव में बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारा आंसर यस या नो में ही आता है. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ वे ऑफ स्पीकिंग, रीजन क्वेश्चन पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आस्क्ड व्हाई do we go to market. Okay, and the other is, why does she go to market. So these are the example of reason question positive. Okay, as you seen that we have added reason before do and does. Okay, do और does से पहले हमने reason को add कर लिया है. So if we look at the reason question positive and reason question पॉजिटिव के साथ देखते हैं क्वेश्चन पॉजिटिव को, तो देयर इज सिमिलरिटी की हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव में सिर्फ जो डू दे रखा है या डज दे रखा है, उससे पहले हमारा रीजन नहीं है. अब अगर हम यहां से रीजन क्वेश्चन पॉजिटिव में से रीजन हटा देते हैं, देन इट वुड बिकम क्वेश्चन पॉजिटिव. यानी क्वेश्चन पॉजिटिव में सिर्फ एक रीजन ऐड करना होता है हमें, तो वो हमारा बन जाता है रीजन क्वेश्चन पॉजिटिव. ओके, सो we'll practice it. Why do I go to market? Why do we go to market? Why do you go to market? Why do they go to market? Why does he go to market? Why does she go to market? Why does it go to market? Why does Mr. Singh go to market? Okay, repeat again. Why do I go to market? Why do we go to market? Why do they go to market? Why does he go to market? Why does she go to market? Why does it go to market? Why does Mr. Singh go to market? We'll random it. Why do I go to market? Why does she go to market? Why do we go to market? Why do they go to market? Why does he go to market? Why does she go to market? Why does it go to market? Why do I go to market? Why does Mr. Singh go to market? Okay, we'll practice like this. Okay, now come on the last way, reason question negative. Okay, the reason why, we'll use the contraction of do not, don't they read a book, and the contraction of does not is doesn't he read a book. So these are the examples of reason question negative. Okay, as you have seen that we have used don't and doesn't before whom to talk, just like question negative. Okay, we have added reason before don't and doesn't. Okay, अब ये हो गया कि why don't they read a book, यानी वो किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं. Okay, so they
हैव टू एक्सप्लेन द रीजन कि वो किताब क्यों नहीं पढ़ते, अब उनको रीजन बताना पड़ेगा. तो दिस वाई दैट्स वाई वी कॉल देम रीजन क्वेश्चंस. ओके, इधर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सिर्फ क्योंकि रीजन हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है तो हम उनको रीजन क्वेश्चन पॉजिटिव या रीजन क्वेश्चन नेगेटिव बोलते हैं. So now we'll practice it. Why don't I read a book? Why don't we read a book? Why don't you read a book? Why don't they read a book? Why doesn't he read a book? Why doesn't she read a book? Why doesn't it read a book? Why doesn't Mr. Singh read a book? We'll random it. Why don't I read a book? Why doesn't he read a book? Why don't you read a book? Why doesn't she read a book? Why doesn't it read a book? Why don't they read a book? Why don't we read a book? Why doesn't Mr. Singh read a book? Okay? So we'll practice like this and we'll learn it by heart so that we can speak in English. Okay? So the first thing is you'll not translate any sentence in Hindi. Okay? Don't try to translate. Just try to speak up in English only. Okay? Because when you'll think in English, you'll speak in English. Okay? So don't try to translate. If you'll try to translate, then you will not be able to speak in English in a good way. Okay, just practice it, make your tongue habitual of English, then definitely you'll soon speak a good English. Okay, so practice it. So in the next class we'll talk about the next concept of our English speaking. Okay, so that's all for today. Thank you. Bye everyone.